हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है और मैं आपको अपने चैनल सिफ्टेक सिंप्लीफाइड पे खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 11 की, जिसमें हम फर्दर 10 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 171 टू 180। आई होप प्रीवियस वीडियोस में आपको काफी हेल्प किया होगा और प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द गेट एग्जाम और एनी सॉर्ट ऑफ जॉब इंटरव्यू और साइट टेस्ट। तो बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन की जानिब, जहां पे हम फर्दर 10 क्वेश्चंस आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पार्ट 11 में क्वेश्चन नंबर 171 says that rivets are generally specified by option A thickness of plates to be joined, B overall length, shank diameter, D diameter of head। रिवेट्स जो है वो जनरली शैंक डायमीटर से स्पेसिफाई किए जाते हैं, उसके डायमीटर से। सो सी इज द करेक्ट आंसर। 172 the object of caulking in a riveted joint is to make the joint option A free from corrosion, B stronger in tension, C free from stresses, D leak proof। so leak proof is the करेक्ट ऑप्शन। कल्किंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो लीक प्रूफ है। 173 a riveted joint may fail by option A tearing off the plate at an edge, option B tearing off plate across a row of rivets, option C शेयरिंग ऑफ रिवेट्स, ऑप्शन डी एनी वन ऑफ दी। सो ये तमाम जो है वो रीजंस हैं किसी भी रिवेटेड जॉइंट के फेल होने के। सो डी इज द करेक्ट आंसर। 174 इन ऑर्डर टू अवॉइड टीयरिंग ऑफ the plate at an edge, the diameter from the center of the rivet hole to the nearest edge of the plate, that is margin, should be। तो कितना एटलीस्ट होना चाहिए मार्जिन ताकि टीयर ऑफ से बचे जा सके? ऑप्शन ए डी लाइक डायमीटर ऑफ द शैंक, ऑप्शन बी 1.5 D, option C 2D, option D 2.5। So 1.5 D is the correct answer for this question. Option B is correct। 175 a lap joint is always in dash shear, ऑप्शन ए सिंगल शेयर, ऑप्शन बी डबल शेयर। कोई भी लैप जॉइंट जो है वो सिंगल शेयर में होता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 176 a double strap butt joint with equal straps is option A always in single shear, option B always in double shear, option C either in single shear or double shear, option D none of these। A double strap butt joint with equal straps is always in double shear, B is the correct answer for this question। 177 the efficiency of a riveted joint is the ratio of strength of joint to the strength of solid plate, option A is true, option B is false। So yes, true is the correct answer। riveted joint की efficiency जो होती है वो ratio of strength of joint to the ratio of solid plate, दोनों की ratio से आती है। So A is the correct answer। 178 in calculating the strength of a riveted joint in tearing, shearing and crushing, the option A actual diameter of rivet is used, option B actual diameter of hole drilled for rivet is used, option C mean diameter of hole drilled and rivet is used, option D smaller of rivet diameter and hole diameter is used। So actual diameter of hole drilled for rivet is used, B जो है वो correct answer है इस question का। 179 if the tearing efficiency of a riveted joint is 50%, then ratio of rivet hole diameter to the pitch of rivet is option A 0.2, option B 0.3, option C 0.5, option D 0.6। tearing efficiency of a riveted joint is 50%, so ratio of rivet hole diameter to the pitch would also be 50%, 0.5 is the correct answer। 180 a welded joint as compared to a riveted joint has dash strength, same, less or more। of course welded joint जो है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है बनिस्बत riveted joint के। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मोर। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपके साथ शेयर किए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, और इसमें से खामखा कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टेस्ट में आते हैं। सो हमने डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 171 से 180 तक। अगर इनमें आपकी कोई भी इम्बिग्विटी है या क्लैरिफिकेशन नीडेड है, सो यू कैन सेंड योर सजेशंस और क्लैरिफिकेशंस थ्रू कमेंट बॉक्स, और यू कैन रीच अस एट sifttechsimplified@gmail.com। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले 10 क्वेश्चंस के साथ। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।